Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 17, direct and indirect speech. Okay, so let's start now this chapter kids. In English language, there are the two ways of telling what a person has said. यहाँ तक कि इंग्लिश लैंग्वेज में ये कहा गया है कि जो पर्सन है उसको जब हम कहते हैं, किसी के द्वारा जब कोई बात करता है, assume that your mother told you to go to market and you want to say it. यहाँ तक कि जैसे तुम्हारी मदर ने तुमसे कहा कि हमें बाजार जाना है, तो your brother then now how would you say these words to him? तब तुम्हारे भाई को मान लो बाजार से कुछ मंगाना है, तब वह तुमसे क्या कहता है? These words can be said in the two ways. यहाँ पर दो कारण है कहने के. एक तो मदर ने कहा तुम्हें बाजार जाना है और भाई ने साथ के साथ सामान बता दिया है ना, तो यहाँ पर हो गए दो वेजेस. If it is the actual words spoken by the mother, actual words हुए जो मदर द्वारा कहे गए, it will be direct speech. इसे हम कहते हैं direct speech. And if the speaker words are reported in your words, that will be in indirect speech. Okay, चलिए read the following sentence है. सीमा said, सीमा ने कहा I am not well, मैं ठीक नहीं हूँ. ये होगी हमारी डायरेक्ट स्पीच. सीमा said that, सीमा ने कहा I चेंज होगा सीमा से she was not well, वह अच्छी नहीं थी. ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच. नेक्स्ट है मदर्स. मोहित said, मोहित ने कहा my brother is writing a letter, मेरा भाई पत्र पढ़ रहा है. ये हो गया डायरेक्ट स्पीच. मोहित said that my brother not, माइक चेंज होगा मोहित से क्या हो गया his brother was writing a letter. ओके, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच. चलिए पॉइंट्स टू पॉन्डर है. When we quote the exact words of the speaker, जब स्पीकर द्वारा एग्जैक्ट वर्ड कहे जाते हैं and the exact word are enclosed with quotation marks, then it is said to be the direct speech. In indirect speech, we do not report the exact word of the speaker, but convey the substances or meaning of a person's speech. Okay, चलिए. Rules for changing direct speech into indirect speech. Usually we change the tense of some forms. वास्तव में जब टेंस को परिवर्तित किया जाता है of a past tense में indirect speech कहलाता है. This change of tense is often referred to as black shift of tenses in reported speech. Okay, चलिए we change tenses when reporting in the direct speech. नंबर फर्स्ट है if the reporting verb is in the simple present. जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में होती है और सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो the verb in reported speech do not change. ओके, चलिए एग्जांपल है जैसे he says, उसने कहा I am playing cricket. तो यहाँ पर क्या है, जो वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की है, तो कैसे बनाएंगे he says that. ही आई चेंज होगा किससे, ही से, तो ही यही रहेगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट रहेगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट. नेक्स्ट, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो द वर्ब इज रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस. ओके, एग्जांपल है रीमा सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन I love books और full stop inverted comma clause. Here reported verb है यहाँ पर past tense में, जैसे रीमा said that she loved books. Okay, चलिए next है change in the verb forms. The reporting verb is in the verb change in the direct speech और यहाँ पर है past tense में और ये है verb change into as a whole. जैसे is MR change होगा was and were से, was were चेंज होगा had been से, had been चेंज होगा no change, has have चेंज होगा had से, had no change, do होगा did से, did होगा had done से, had done होगा no change,
विल शैल होगा वुड से, मस्ट होगा हैड टू से, वुड शैल शुड होगा। ये चेंज नहीं होते। ओके, चलिए चेंजेस इन टेंसेस। The changes in tenses in reported speech are as follow. नंबर फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होगा सिंपल पास्ट टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सिंपल पास्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट। Past continuous change to past perfect continuous. Past perfect change into does not change. Past perfect continuous does not change. Will का would, shall का होगा should, can का could, may का होगा might. ओके, और जितने भी हमारे हैबिचुअली यूनिवर्सल्स हैं वो नो चेंज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है नेहा सेड टू हर। नेहा ने अपने मित्रों से कहा द मैन हैज बीन वर्किंग इन दिस फॉर 4-5 years। ओके, चलिए तो द वर्ब हैज बीन वर्किंग इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो व्हेन वी राइट दिस इन द रिपोर्टेड स्पीच द टेंस ऑफ वर्ब चेंजेस। जैसे Neha told her friend that the man had been working in that firm for 5 years. ये हो गया indirect speech. Change in the tense for modal auxiliary verbs. Okay. In reported speech, will, the modal auxiliaries can, may, might, will, and shall we change the modal to the past tense. एग्जाम्पल है he said comma inverted comma I can give you a gift। तो he said that he could give me a gift। जया ने कहा I will buy the book। जया said that she would buy the book। नेक्स्ट है changes in words refreshing to time, place or position। ओके, चलिए जैसे हियर का देयर, दिस का दैट, दीज का है दोस, टुमारो द डे आफ्टर, टुडे दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुनाइट दैट नाइट, टू डे अगो, 2 days बिफोर, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ। ओके, चलिए नेक्स्ट है किड्स चेंजेस इन प्रोनाउंस। प्रोनाउन चेंज करने हैं। व्हेन वी चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं द प्रोनाउन चेंजेस सो दैट शी रिलेशनशिप बिटवीन द रिपोर्टर एंड द स्पीकर। तो इनमें स्पीकर रिपोर्टर में क्या होता है, एक रिलेशन क्रिएट होता है ऑफ द रिपोर्टेड utterance is shown। Usually the first person changes to the third person. This is the true for possessive pronouns. Also, however, if the person reporting is the speaker, the pronoun does not change। Example है a student in the class 8 रघु said that indirect लाएंगे तो रघु किससे आई किससे चेंज हुआ, प्रोनाउन किससे चेंज हुआ, रघु से। रघु क्या है, he studied in class 8। ओके, चलिए नेक्स्ट है I said we are late। तो कैसे बनेगा, I said that we were late। नेक्स्ट है सागर said ने कहा we always meet on Sunday। तो सागर said that किससे चेंज होगा, we सागर से, the they always meet on Sundays। ओके, चलिए नेक्स्ट है द सेकेंड पर्सन चेंजेस टू द फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन डिपेंडिंग ऑन हु इज रिपोर्टिंग द utterance। एग्जाम्पल है माधव से टू हर बेस्ट फ्रेंड। तो यू चेंज होगा हिज बेस्ट फ्रेंड से, आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो लिखेंगे हम यहाँ पे माधव सेड दैट ही वाज हिज बेस्ट फ्रेंड।
चलिए थर्ड पर्सन remains the same when begin reported. एग्जाम्पल हरी सेड दे आर गुड पीपल्स, तो बनाएंगे हरी सेड दैट, दे का दे रहेगा वर गुड पीपल्स. ओके चलिए बिट्टू सेड, शी चेंज होगा बिट्टू से. नेक्स्ट है बिट्टू सेड शी इज ऑलवेज पंक्चुअल. बिट्टू ने कहा शी क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन इज नो चेंज, इज ऑलवेज पंक्चुअल बनेंगे बिट्टू सेड दैट शी वाज ऑलवेज पंक्चुअल. ओके चलिए पॉइंट्स टू पॉइंटर पॉइंट्स है किड्स. We use tell if the reporting verb is followed by the name of a person or a pronoun used for that person being spoken to in indirect speech. Okay, चलिए. फिर एग्जाम्पल, प्रिया said to मोनिका, प्रिया ने मोनिका से कहा you have not taken your lunch. So Priya told Monica that she had not taken her lunch. When the person begins spoken to is not mentioned after the reporting verb, we use any. Kiran said it is a holiday. So Kiran said that it was a holiday. Okay, चलिए. फिर है conversation of the interrogative sentences into indirect speech. चलिए, the reporting verb is usually changed into verbs like ask, inquiry and demand. Next है inverted commas and the mark of the interrogations are omitted. Next है the structure of the reported speech is changed from interrogative form to assertive form. Next up, when we have WH interrogative words like WHO, who, what, whose, whom, where, when, why, which, of, how at the beginning of a question, no conjunction is used after the reported word. Examples है सुजैन said, सुजैन ने कहा mother where have you kept my new pair of shoes. डायरेक्ट स्पीच हो गया. उसने कहा सुजैन asked her mother where she had kept her new pairs of shoes. In direct speech, I said to her, मैंने उससे कहा when do you do your homework. तो I asked her when she did her homework. Okay, चलिए reporting question text है. When reporting statement are with question text who do not actually mention the words in the text, however according to the meaning conveyed we can use various forms. Okay, चलिए एग्जाम्पल्स हैं. सी सेड, उन्होंने कहा दिस इज स्मार्ट, यह स्मार्ट है, इट इजंट, यह नहीं. बनेंगे शी सेड दैट वाज स्मार्ट एंड आस्क्ड इफ आई एग्रीड. ओके चलिए आगे है कन्वर्सेशन ऑफ एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. When we report exclamatory sentences, we change them to statement. Number first है, we use these reporting verbs जैसे exclaimed, blamed, praised, cried out, regretted, wished, desired, aptitude, etc. With exclaiming, we usually add expressions for feelings जैसे exclaimed with fear, with joy, with surprise. We use the conjunction that to introduce the reported sentences. We change the verb to an appropriate past tense form. Okay, चलिए एग्जाम्पल है. She said, "What a beautiful house this is." So she exclaimed that the house was very beautiful. ये हो गया indirect speech. Reporting commands and request. इसमें क्या है? When we report commands and request, जब हम commands को request को report करते हैं, the reporting verb change and in the infinitive forms of the main verb in the reported sentence is used. We used words expressing commands or requested as the reporting verb, etc. है ordered, commanded, shouted or demanded. Example है leave the room right now. He said, उसने कहा. So he ordered us to leave the room right then.
चलिए आगे, sometimes reporting command and requesting in the reporting verb is followed by the name of the person or a pronoun being addressed in the direct speech. चलिए एग्जाम्पल है, अंकुर सेड, अंकुर ने कहा water the plants. Okay, अंकुर asked the gardener to water the plants. ठीक है, चलिए. Okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.